Jai Hind and very good morning, students. So, as we are taking this subject, additive manufacturing, KME 071. So, let us start this you can say the lecture number 3. So, before starting the lecture number 3, we will just discuss what we have just done in the lecture number 1 and 2. So, as you know that in the lecture number 1, we have just studied about the introduction part of the additive manufacturing, history of the additive manufacturing, and how the additive manufacturing is different from the CNC machining, because both are the computer aided manufacturing techniques. Okay. So, now in continuation we will just also talk about this, what is the classification of additive manufacturing. We have already studied about the two classification of the additive manufacturing, but still few left. So, we will just cover that the classification in this particular this lecture, and after that we will also talk about some of the nomenclature of the additive manufacturing, because that is also important part. So, now let us start. So, before starting, let us see what is the outline of this additive manufacturing. As you can see, that classification of additive manufacturing, the binder jetting, material extrusion, sheet lamination process, and the powder bed fusion process, direct energy deposition process, and after that we will just talk about the nomenclature of additive manufacturing machines. Now, so first of all, let us start with this binder jetting. What actually the binder jetting it is? As you know that you can just see in this diagram, or in this you can see in this video, that the binder jetting process uses the two material over here, and the powder based material and a binder. Means one is the पाउडर बेस्ड मटेरियल, मतलब हमारे पास एक मटेरियल है जिसको हम लोग को डिपॉजिट करना है, और दूसरा है हमारे पास बाइंडर जो बेसिकली वर्क करेगा कि आपका जो मटेरियल है उसको बाइंड करने के लिए. तो द बाइंडर एक्ट एज एन एडहेसिव बिटवीन द पाउडर लेयर्स. तो जो आपकी पाउडर की जो लेयर्स होंगी, एज यू नो दैट इट इज अ लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो आपकी जो पाउडर की जो लेयर्स है, ओके, तो उस लेयर्स को बाइंड करने के लिए वी यूज द बाइंडर ओवर हियर, एंड दिस वी आर हैविंग वन, यू कैन से अ रोलर, और यू कैन यूज द ब्लेड ओवर हियर जस्ट टू कि आपकी जो थिकनेस है, ताकि हम उसको पूरा प्रॉपर लेवल कर पाएं, जितनी आपको थिकनेस बेसिकली रिक्वायरमेंट है हम उसको उतनी थिकनेस दे पाएं. बिकॉज व्हेन यूज टू व्हेन यूज टू वन मटेरियल टू डिपॉजिट, तो होता क्या है कि दैट लेयर इज बेसिकली नॉट अ परफेक्ट दैट यू रिक्वायर्ड, तो वो एकदम परफेक्ट नहीं होती है. तो उसके लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, दैट वी यूज द रोलर और अ ब्लेड. हम लोग उसको रोलर और ब्लेड से उसको एक थिकनेस पर्टिकुलरली प्रोवाइड करते हैं, और जो उसका एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको फिर हम लोग हटा देते हैं. ओके, सो द बाइंडर इज यूजुअली इन द लिक्विड फॉर्म एंड द बिल्ड मटेरियल इन द पाउडर फॉर्म. तो ये बेसिकली यहाँ पे इसका यू कैन से कि इनपुट है कि आपके पास दो टाइप के मटेरियल हैं, वन इज इन द लिक्विड फॉर्म एंड अनदर इज इन द पाउडर फॉर्म. तो जो पाउडर फॉर्म है दैट इज बेसिकली द मटेरियल जो आपको डिपॉजिट करना है, एंड दिस बाइंडर इज बेसिकली इन द लिक्विड फॉर्म जिसको आपको एज अ बाइंडर यूज करना है, उसको चिपकाने के लिए, बेसिकली बाइंड करने के लिए. ओके, नाउ होता क्या है इस प्रोसेस में, दैट अ प्रिंट हेड बेसिकली मूव हॉरिजॉन्टली अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सेस. जैसे कि सभी प्रोसेस में आप लोग देखा कि एक एक्स और वाई एक्सेस में आपकी नोजल जो है वो मूव करती है, ओके, ऑफ द मशीन, एंड डिपॉजिट ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ द बिल्ड मटेरियल एंड द बिल्डिंग मटेरियल एंड द बाइंडिंग मटेरियल, सॉरी. एंड आफ्टर ईच लेयर द ऑब्जेक्ट बीइंग प्रिंटेड इज लोवर्ड ऑन इट्स बिल्ड प्लेटफॉर्म. तो इसके पास भी वही सेम चीज़ है जैसे वेट फोटो पोलिमराइजेशन में हमने देखा कि दैट वी आर हैविंग वन प्लेटफॉर्म जिसके के ऊपर आप डिपॉजिट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसको बेसिकली हम लोग मूव करते हैं जस्ट फॉर द जेड एक्सिस मूवमेंट. ओके, रेदर देन यूज टू मूव योर नोजल, हम लोग क्या करते हैं, बिल्ड प्लेटफॉर्म को मूव कराते हैं इन द जेड डायरेक्शन. ओके, so due to the method of the binding, the material characteristics are not always suitable for structural parts, and despite the relative speed of the printing, additional post processing can add significant time to the overall process. And as with other powder based manufacturing method, the object being printed is a self supported, okay, within the powder bed, and it is removed from the unbound powder once completed. So this is basically the few characteristic of this binder jetting. Okay, now how this process basically takes place, we will just take the step by step, we will just see. So the powder material is spread over the build platform using a roller. As I have told you, you can just use a roller or a blade, that is depending upon you. And the print head deposit the binder adhesive on the top of the powder when required. Then the build platform is lowered by the model's layer thickness, means whatever layer thickness you required, you can just lower down your the bed.
Then another layer of the powder is spread over the previous layer, and the object is formed when the powder is bound to the liquid. Means whatever the object you required, as per that CAD file, the powder is basically being spreaded, and that binder is basically spreaded, and then they used to be bind, and they will make one CAD 3D basically model over here. Then unbound powder remains in the positions around the object, and the process is repeated until the entire object has been made. Means until the final 3D model we get, we have the same process, means that again a layer by layer. Okay, so this is basically process of binder jetting. Now if we just talk about the material, what material we can use over here, as you can see that the gypsum powder chalk, basically the powder of the chalk we can use for this binder jetting as a material to deposit the 3D model, and the plastic, ceramics, metal, glass, sand. So we are having a variety of the material over here to deposit in this particular binder jetting machine. So it can create the object faster than most other additive manufacturing process and in full color. Means you can also use the color over here, means to if you just require that the user you want to show some features by some other color, so you can just go for the different colors. Okay, so binder jetting products needs to fragile and require post processing, including cleaning, hardening, which can be tedious and the time consumed. So it is basically a limitation of this particular process. Now let us move to the another process, that is a metal extrusion process, and it is the, you can say, a very popular process for the polymer, the metal extrusion, and it is also named as the FDM, fused deposition modeling, and it is being given by the Stratasys company, and they have the trademark of this FDM. Okay, so material is basically extruded in this particular process. Means you are having, as you can see, that you are having a thermoplastic filament over here, and that is being given by a spool. वो एक spool में पूरा लिपटा रहता है, and आपको क्या करना पड़ता है, that आपको उस spool से using the rollers आप उसको wires को चलाते रहते हैं, and that उस wires को basically आप nozzle को देते रहते हैं, और nozzle में basically you are having one heated filament over there, तो वो इसको heat करके और उसको semi liquid state में it is used to deposit that on the platform, or you can say it is basically deposited on some workpiece. Okay, that will depend how on what you want that material, means किसके ऊपर आपको उस material को deposit करना है. So okay, so the nozzle can move horizontally and the platform moves up and down vertically after each layer is deposited. So just like the same in the binder jetting, जैसे हम लोगों ने देखा कि आपकी जो nozzle है उसका movement जो है वो x और y डायरेक्शन में है, और जो जेट की डायरेक्शन का जो मूवमेंट है वो हम लोग बेसिकली किससे कर रहे हैं, बाय यूजिंग दैट बेड. ओके, हम उसको उसके जो प्लेटफॉर्म को बेसिकली ऊपर और नीचे कर रहे हैं. ओके, नाउ सो if we just talk about this characteristic, means how this basically happens, metal extrusion. So the process has many factors that influence the final model quality, but has a great potential and viability when these factors are being controlled successfully. So FDM is similar to all 3D printing process as it builds the layer by layer. It is basically the same concept of the layer by layer manufacturing, but it varies in the fact that material is added through a nozzle under a constant pressure and in a continuous stream. तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे कि आप सेम ही सबका जो कंसेप्ट है, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके पास सेमी लिक्विड स्टेट में यू आर हैविंग द मटेरियल, और उस मटेरियल को थ्रू द नोजल आप लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, बट अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर एंड इन अ कंटीन्यूअस स्ट्रीम. वो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी रोलर ओवर हेयर कि आपको अगर लेयर थिकनेस इतनी चाहिए तो आप लोग बेसिकली आपके पास कोई रोलर नहीं है कि आपको उस थिकनेस को बेसिकली मेंटेन करने के लिए. तो आप लोग क्या करते हैं, यू जस्ट रिक्वायर्ड अ वेरी कांस्टेंट प्रेशर, ताकि आप उसको बेसिकली जो उसकी थिकनेस को प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाएं. ओके, एंड दिस प्रेशर मस्ट बी केप्ट स्टडी एंड एट अ कांस्टेंट स्पीड टू अनेबल द एक्यूरेट रिजल्ट्स. ओके, so that you can get the accurate result, you just require a constant speed and the constant pressure. Okay, so the material layers can be bonded by the temperature control and or through the use of chemical agents. तो या तो यहाँ पे आप टेम्परेचर को कंट्रोल करिए, उसके हिसाब से आप मटेरियल की लेयर को बॉन्ड कर सकते हैं, या फिर केमिकल एजेंट्स की प्रोसेस से आप इसको बेसिकली बॉन्ड कर सकते हैं लेयर को एक दूसरी लेयर के ऊपर. ठीक है, सो मटेरियल इज ऑफन एडेड टू द मशीन इन द स्पूल फॉर्म. तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो मटेरियल होता है बेसिकली यहाँ पे एक स्पूल फॉर्म में होता है, एक वायर है जो कि पूरा एक स्पूल फॉर्म में लिपटा हुआ है, और वो उसको फिर हम लोग बाय यूजिंग द गियर्स हम लोग उसको फिर फीड करते हैं थ्रू द नोजल. ओके, नाउ
If we just go for the step by step process for this material extrusion, so the first layer is built as the nozzle deposit material where required onto the cross sectional area of the first slice and the following layers are added on the top of the previous layer. जैसे कि सिंपल, जैसे कि हम लोग सब में करते हैं, एक हम लोगों ने लेयर बनाई है और उसके बाद फिर हम लोग लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग करते चला रहे हैं, एंड द लेयर आर फ्यूज टुगेदर अपॉन डिपोजिशन एज द मटेरियल इज इन अ मेल्टेड स्टेट, क्योंकि वो मेल्टेड स्टेट में रहता है तो इसलिए वो आपस में फ्यूज जाती हैं लेयर दोनों के दोनों, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ द मटेरियल एक्सट्रूजन और यू कैन से द FDM प्रोसेस. नाउ this is the fifth process, that is the sheet lamination process. So as the name suggests, lamination, so we over here we used to laminate the sheets. Okay, so sheet lamination process include the ultrasonic additive manufacturing and the laminated object manufacturing. Okay, so these are basically the names that are given to this sheet lamination, LOM or UAM. We can just rename them, we can just call them by these names. Okay, so the ultrasonic additive manufacturing process use the sheets or ribbon of metal which are bound together by using the ultrasonic welding. So यहाँ पे हम लोग उन दोनों को बॉन्ड करने के लिए क्या यूज करेंगे, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का यूज कर रहे हैं हम लोग. ओके, एंड अगर हम लोग बात करें दिस लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली किसी ग्लू का यूज कर लेते हैं. ओके, सो द प्रोसेस डज रिक्वायर एडिशनल CNC मशीनिंग एंड द रिमूवल ऑफ द अनबाउंड मटेरियल ऑफन ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस. तो जैसे हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस में हमारा क्या होता है कि अगर हमारा कोई एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है तो व्हाट वी यूज टू डू, वी यूज टू रिमूव दैट मटेरियल बाय यूजिंग द CNC मशीन. तो सेम भी हमारे यहाँ पे भी इसमें सेम वही है कि आपने किसी मटेरियल को पूरा लैमिनेट कर दिया है, लैमिनेट करने के बाद जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसको कैसे हटा सकते हैं, यू कैन जस्ट रिमूव दैट पार्ट बाय यूजिंग योर CNC मशीन. ओके, एज यू कैन सी इन दिस वीडियो ऑल्सो दैट over here you are having this laser, and over here you are having the mirror. आपके पास यहाँ पे mirror है, and that mirror is basically used to control your laser or the ultrasonic waves. So means where you want to impinge these basically the rays. Okay, कहाँ आप इन लेजर, इनकी जो rays हैं इनको कहाँ आप basically डालना चाहते हैं इस पूरे laminate basically को deposit करने के लिए, तो that is basically done by this mirror. Okay, so that is mirror is basically the guiding mirror over here. Now LOM uses a similar layer by layer approach but uses the paper as material and adhesive instead of a welding. Okay, and the LOM process use a cross hatching method during the printing process to allow for easy removal post builds. तो यहाँ पे आपको ये बेसिकली क्रॉस हैच मेथड यूज़ करते हैं ताकि आपका जो पोस्ट बिल्ड जो बेसिकली रिमूवल करना हो तो उसके लिए बेसिकली ये क्रॉस हैच मेथड यूज़ करते हैं. एंड द लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स आर ऑफन यूज फॉर द एस्थेटिक्स एंड द विजुअल मॉडल्स एंड आर नॉट सुटेबल फॉर द स्ट्रक्चरल यूज़. तो आप इसको स्ट्रक्चरल यूज़ के लिए बेसिकली नहीं यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको कोई पेपर का लेमिनेट, अगर आपको पेपर से कोई 3D मॉडल बनाना है तो उससे आप बेसिकली लोम का बेसिकली यूज़ कर सकते हैं. एंड UAM अगर मैं बात करूँ तो UAM बेसिकली यूज़ होता है आपके एल्युमिनियम मीन्स फॉर द मेटल्स दैट इंक्लूड्स द एल्युमिनियम, कॉपर, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम. तो UAM अगर आपको शीट लैमिनेशन में जाना है मेटल के केस में तो यू हैव टू गो फॉर द UAM. ओके, एंड इफ यू जस्ट रिक्वायर फॉर द पॉलीमर और द पेपर सो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस लोम. So the process is the low temperature and allows for the internal geometries to be created. Okay, तो आप इस process, ये low temperature process है और ये internal geometry आप इससे बहुत easily create कर सकते हैं. And the process can bond different material and require relatively little energy as the metal is not melted. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बिकॉज आपको पूरा जो मेटल है उसको मेल्ट नहीं करना है. ठीक है, दैट इज बेसिकली इन द सेमी मेल्टेड स्टेट. ओके, तो दे कैन बॉन्ड द डिफरेंट मटेरियल एंड रिक्वायर रिलेटिवली लिटिल एनर्जी. जैसे कि हम लोग देखेंगे अभी पाउडर बेड और डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन में वहाँ पूरा मेल्ट करना पड़ता है हम लोगों को. ओके, नाउ so we just go by these step by step. So the material is positioned in place on the cutting bed and the material is bonded in a place over the previous layer using the adhesive, and the required shape is then cut from the layer by the laser or a knife, and the next layer is added same like the other process. एक layer बन गई है हमारी, then we फिर सब आपका जो पूरा process है उसको आप फिर पूरा continuously same आप दूसरी layer बिछाइए, फिर तीसरी layer, then fourth layer, and that you use to get the whole model. Okay, now if we just go for the powder bed process, so powder bed and the direct energy deposition is the you can say
they are using 95% for the metal deposition in the additive manufacturing. अगर हम लोग मेटल डिपोजिशन की बात करें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो मेथड है वो पाउडर बेड फ्यूजन और डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन प्रोसेस है. बिकॉज ओवर हेयर वी आर यूजिंग द you can say the high energy source like the laser or the electron beam. Okay, as you can see in this video that a laser is basically coming on, and that is over here we are having one this mirror. Okay, and that mirror used to guide के आपको basically कहाँ पे पाउडर को मेल्ट करना है. And over here you are having one reservoir of the powder. Okay, in which we are having a powder, and that powder is spreaded down over this bed. जो पाउडर है इसको हम लोग पूरा स्प्रेड कर देते हैं आइदर यूजिंग दिस रोलर और बाय यूजिंग सम नाइफ. ओके, ये आपको जितनी थिकनेस चाहिए, जितनी लेयर थिकनेस आपको बेसिकली रिक्वायर्ड है, आप उतनी लेयर थिकनेस इस रोलर से या फिर उस नाइफ से पूरा एक साइड से स्प्रेड करते चले जाइए. एंड आफ्टर दैट स्प्रेडिंग डाउन आपकी जो लेज़र है वो जितना जो भी आपको बेसिकली फर्स्ट लेयर की जो भी आपकी ज्योमेट्री है उसको बेसिकली आपकी जो लेज़र है वो मेल्ट कर देगी. ओके, यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग और सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग. तो वो मेल्ट करना या सिंटरिंग करनी है, दैट विल डिपेंड अपॉन यू कि किस प्रोसेस को कैसे आपको यूज करना है. ओके, सो द पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस इंक्लूड द फॉलोइंग कॉमनली यूज प्रिंटिंग टेक्निक्स, द डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग एंड द SLM और यू कैन से द SLX, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग. ओके, सो powder bed fusion method use either a laser or the electron beam to melt or fuse the material powder together. मतलब अगर हम लोग एनर्जी सोर्स की बात करें तो आपके जो इलेक्ट्रॉन बीम या फिर लेज़र आप लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं बिकॉज दीज आर द हाई एनर्जी सोर्स फॉर मेल्टिंग डाउन दी पाउडर, फॉर मेल्टिंग डाउन दी मेटल पाउडर. ओके, हम लोग इसमें सिरेमिक्स भी बेसिकली यूज़ करते हैं. ठीक है, और बेसिकली जो हमारा बेसिक पर्पस है इस टेक्निक का वो जो हमारे हाई मेल्टिंग पॉइंट्स के बेसिकली जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनको मेल्ट कराना है, because we are using the high energy source over here. So okay, so that's why we can just go for the metals or the ceramics in this powder bed fusion process and the direct energy deposition in both the process. So all PBF process involves the spreading of the powder material over the previous layers, and these are the different mechanisms to enable this include a roller or a blade and a hooper or a reservoir below. Of aside the powder provides the fresh material supply, means at every time we used to deposit when we used to deposit a layer, so we just required another fresh powder that is to spread on the previous deposited layer. Okay, अगर हम लोगों को दूसरी लेयर बिछानी है तो एक फ्रेश पाउडर हम लोग लेके आते हैं और फिर उसको पूरा डिपॉजिट करते हैं, और जो बाकी का हमारा पाउडर होता है उसके लिए हम लोग एक और अलग से रिजर्वायर रखते हैं सो दैट कैन बी कलेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर रिजर्वायर. ओके, उसको हम लोग बाद में भी रीयूज कर सकते हैं. ओके, एटोमाइजेशन करके, मेल्टिंग करें एटोमाइजेशन करके. सो द प्रोसेस सिंटरिंग द पाउडर लेयर बाय लेयर and the selective heating sintering differs from the other process by the way of using the heated thermal printed head to fuse the powder material together. Okay, so this is basically the concept of this powder bed, and these are basically the step by step process how this process basically takes place. A layer typically 0.1 mm thick of material is spread over the build platform. The thickness will depend कि आपको कितनी लेयर चाहिए, है ना, कितनी लेयर की थिकनेस चाहिए, बिकॉज बहुत सारे प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं इसके अंदर. जैसे कि लेज़र आपका एक बहुत बड़ा प्रोसेस पैरामीटर है जो बेसिकली सिग्निफिकेंट प्रोसेस पैरामीटर है. एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो आपकी लेज़र का मूवमेंट बेसिकली द स्पीड ऑफ द योर लेज़र दैट इज ऑल्सो दी वन सिग्निफिकेंट पैरामीटर ओवर हियर. लेयर की थिकनेस इज ऑल्सो दी मेन पैरामीटर. हैच का डिस्टेंस इज ऑल्सो दी मेन पैरामीटर for this powder bed fusion process. Okay, so the laser fuse the first layer or the first cross section of the model, and the new layer of powder is spread over the previous layer using a roller, and the further layer or the cross section are fused and added, and the process repeat until the entire model is created. जब तक कि पूरा मॉडल नहीं बन जाता है ये सेम प्रोसेस चलता रहता है. And the loose or the unfused powder it is remain in position but is removed during the post processing. तो जो हमारे अनलूज पाउडर हैं या फिर जो पाउडर आपके फ्यूज नहीं हुए हैं उनको हम लोग क्या करते हैं बाय यूजिंग सम पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक, बाय यूजिंग द टम्बलिंग और बाय यूजिंग सम सैंड ब्लास्टिंग हम लोग उनको रिमूव कर देते हैं. दैट इज बेसिकली द पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक्स. ओके, नाउ
So this is basically the direct energy deposition process. So direct energy deposition process that covers a range of terminology, means the laser engineer net shaping, direct light fabrication, direct metal deposition, 3D laser cladding. ओके तो जो लेज़र क्लैडिंग है, बेसिकली लेज़र क्लैडिंग इज बेसिकली कि आपको अगर कोई किसी चीज़ को रिपेयर करना है तो हम लोग क्या करते थे कि वहाँ पे क्लैड कर देते थे उसके ऊपर. ओके सो उसी टेक्निक का एक एक्सटेंशन वर्जन है ये डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन प्रोसेस. अगर जैसे हम लोग वहाँ पे रिपेयर करने के लिए एक पूरी लेयर बिछाते हैं, तो उसी लेयर को अगर हम लोग बढ़ाते चले जाएं तो वी कैन जस्ट मीन्स मेक अ होल 3D मॉडल ऑफ any material. Okay, means basically for the metals and the ceramics. So it is more complex printing process commonly used to repair or add the additional material to the existing component. Okay, तो इसमें भी बिल्कुल same process as you can see over here that this is basically the nozzle. और nozzle के इसके जो चारों तरफ means the coaxially attached आपकी basically powder की छोटी छोटी nozzles लगी जाती हैं, और आपकी जो laser source है that will come from over here. ओके एंड कोएक्सियली नट अटैच आपके यहाँ पे बेसिकली पाउडर की नोजल्स लगी जाती हैं, और पाउडर जैसे ही आपका यहाँ से आता है तो ये बेसिकली लेजर को हम लोग यूज करते हैं टू फ्यूज दैट पाउडर, एंड दैट व्हेन दैट पाउडर इज बेसिकली बीइंग फ्यूज्ड और मेल्टेड, सो उसको हम मेल्टेड पार्ट को इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉपलेट्स हम उसको डिपॉजिट करते चले जाते हैं. ओके सो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस, डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन प्रोसेस. वैसे तो हम लोग इसमें पाउडर यूज करते हैं, बट nowadays another technique is being developed, that is VAM, wire arc additive manufacturing. Okay, so that is basically also included in this direct energy deposition process, जहाँ पे हम लोग wire use करते हैं, okay, rather than this powder to deposit. Okay, means as a input material हम लोग वहाँ पे wire को use करते हैं. Now, a typical DED machine consists of a nozzle that is mounted on a multi-axis arm which deposit melted material onto the specified surface where it solidifies, and the process is similar in the principle to material extrusion, but the nozzle can move in multiple direction and it is not fixed to a specific axis. Okay, तो यहाँ पे जो आपकी नोजल है that can move in the multiple direction, वो एक डायरेक्शन में स्पेसिफिक एक्सिस नहीं है, तो वो एक्स वाई में मूवमेंट कर सकती है. ओके and the material can be deposited from any angle due to the 4 or 5 axis machines is melted upon deposition with a laser or electron beam. ओके तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वैसे तो हमारी मूवमेंट आपने देखा होगा कि सभी जितने भी हमारे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं उसमें आपकी जो मूवमेंट है नोजल की वो एक्स और वाई में मूव करती है, बट ओवर हेयर अगर आप लोग देखें तो होता क्या है कि यहाँ पे आपका मूवमेंट इन द 4th एंड द 5th एक्सिस में भी हो सकता है. ओके बिकॉज आपकी जो नोजल है दैट इज बेसिकली यू कैन जस्ट रोटेट दैट नोजल. अगर आप उसको रिपेयरिंग के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप उसको रिपेयरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं. So the process can be used with polymers, ceramics, and but it is typically with the metals in the form of either powder or the wire. Okay, so typical application include repairing and the maintaining the structural parts, and this is basically a step-by-step process for the direct energy deposition process. So a 4 or the 5 axis arm we have with the nozzle that moves around a fixed object, and the material is depositing from the nozzle onto existing surface of the object, and material is either provided in the wire or the powder form, and the material is melted using a laser, electron or the plasma arc upon deposition. So we can also use the plasma arc. Okay, when we used to go for the VAM, we are also using this plasma arc to melt that wire material. So further material is added layer by layer and solidifies that creating or repairing a new material features on the existing object. Okay, so this is basically the concept of the direct energy deposition process. Now we will see about the nomenclature of the additive manufacturing process. You can just see that there are the 3 names are given: fabbers, office machine, and the shop floor machines. Fabbers, office machines, and the shop floor machines. So fabbers are also called the personal fabricator, personal fabbers, personal printer, personal 3D printer. So these are basically, you can see, the personal things. So these are the basically the fabbers that you can just create your own 3D printer. These are the office machines, office printer, professional 3D printers. Okay, so you can use as a professional one, and these shop floor machine are used for the production purpose. The production machine, production printer, and the production 3D printers. Okay, and these are the application semi-professional or private or use at the home or office. So use professional use in the office or in a workshop. These are the professional use in the production or professional job shop to create a end use product. Okay, now
Application level is the rapid prototyping, solid image concept modeling, rapid prototyping, functional master of the secondary rapid prototyping, rapid manufacturing, direct prototyping. We will cover this in the next lecture about the application level of these nomenclature of the additive manufacturing. Okay, now thank you so much. We will take the next lecture, lecture number 4. So thank you so much.